Good morning, everyone. Welcome to the next science class. Hope you have done the short question answers and first long question of chapter 3 Safety and First Aid. Dear students, today we will do the remaining long question answers and 3 reasoning questions of this chapter. Second question is, what is a fracture? What should be done in case of a fracture? Answer is, crack in any bone is called fracture. In case of a fracture, डू नॉट मूव फ्रैक्चर्ड पार्ट, हमें फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव नहीं करना. सेकेंड पॉइंट इज, इफ द फ्रैक्चर इज इन द आर्म, यूज अ स्लिंग और अ स्प्लिंट. अगर आर्म में फ्रैक्चर है तो वी शुड यूज अ स्लिंग और स्प्लिंट. दोनों ही फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट करते हैं एंड दे हेल्प टू मेक इट इमोबिलाइज, मीन्स उसकी मूवमेंट को रोकने में हेल्प करते हैं. थर्ड, take the injured person to the doctor. Now, third question is, what first aid can be provided in case of a major wound? Answer, first point, wash the area with water and press it with cotton. अगर major wound है, heavy bleeding हो रही है, तो first of all we should wash the area with water to remove dirt and then we have to press it with cotton. Second point is, use a tourniquet just above the wound to stop bleeding. Then we can tourniquet that area. अगर tourniquet नहीं है तो we have to use the hanky. तो hanky को wound के just above, थोड़ा सा ऊपर tightly बांध देना to stop bleeding. It will put pressure on vein or artery. Third is, apply an antiseptic on the cut. Then we have to apply antiseptic. We can use Dettol or Savlon. Fourth is, take the patient to the doctor if bleeding does not stop. फिर भी bleeding बंद नहीं होती तो we have to take the patient to the doctor. Fourth question is, what are the symptoms of a fractured part of the body? The common symptoms of a fracture, कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि if there is fracture. First is swelling of the fractured part. जहाँ पे fractured part है वहाँ पे swelling हो जाती है. Second, it is painful and difficult to move. Third, skin darkening at the place of fracture. Fractured part पे थोड़ा सा जो skin है dark हो जाती है. There will be reddish or bluish patch on that area. Fifth question is, Reena was participating in a dance competition. Suddenly her ankle twisted and swelled. What first aid can be provided in such situation? कि वो डांस कर रही थी, उसका पैर मुड़ गया और स्वेलिंग आ गई, तो हमें क्या फर्स्ट एड कैसे देनी है? फर्स्ट इज, रेस्ट द इंजर्ड पार्ट को मूव नहीं करना. सेकेंड, सोक द स्प्रेन्ड पार्ट इन वेरी कोल्ड वाटर और अप्लाई एन आइस पैक. तो फर्स्ट डे उसको कोल्ड वाटर में सोक करना है इंजर्ड पार्ट को, और वी कैन अप्लाई एन आइस पैक ऑल्सो. Third, from second day onwards, it can be soaked in warm water 2 or 3 times a day. Next day means second day, we have to soak that sprained area in warm water. उसको warm water में soak करना है 2 or 3 times a day for a few minutes. Then fourth is, wrap an elastic bandage around the joint. We can wrap an elastic bandage. Or fifth is, consult a doctor also. We have to take the patient to the doctor also. Now give reasons. First, water should not be thrown on fire caused by petrol or kerosene. अगर आग पेट्रोल और केरोसिन से लगी है तो पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? Answer is, petrol and kerosene are lighter than water. They float over water and will continue burning. दोनों ही पानी से हल्के हैं. And they start floating over water. तो आग बुझेगी नहीं, it will continue. So we should not throw water if the fire is caused by petrol or diesel, petrol or kerosene. Second is, damaged gas pipe should be repaired immediately. So why should we repair the damaged gas pipe immediately? Answer is, damaged gas pipe can cause the leakage of gas. वहाँ से गैस लीक हो सकती है. It can result a major fire if we light a match or switch on the light.
अगर हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं या फिर हम मैच स्टिक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भयंकर आग लग सकती है. So we should repair the damaged gas pipe immediately. Third is a fractured part should not be moved. Fractured part को move क्यों नहीं करना चाहिए? A fractured part should not be moved because it will be painful and can cause further damage. Thank you, beta. Have a nice day.